Here's day 9 of your English grammar course. Day 9. Articles a, and the. Articles a, an, or the. What are articles? Articles are words used before nouns to show whether the noun is specific or general. Articles वो अल्फाज हैं जो इसम से पहले आते हैं और बताते हैं कि इसम मखसूस है या अमूमी. Types of articles. 1. Indefinite articles. A and an. Use a before words starting with a consonant sound. Use an before words starting with a vowel sound. A-E-I-O-U. इसे अल्फाज से पहले आता है जो हर्फ इलत के अलावा शुरू होते हैं. आन ऐसे अल्फाज से पहले आता है जो हर्फ इल्लत से शुरू होते हैं. Examples: a book, a cat, एक बिल्ली, an apple, एक सेब, an elephant. 2. Definite article the, used for specific or known things. The खास या मालूम चीजों के लिए इस्तेमाल होता है. Examples: the sorted, the boy, वो लड़का, the car. Article, use case. Example, Urdu translation. A. Before singular, general noun, starting with consonant sound, a dog, ek dog. Before singular, general noun starting with vowel sound, an orange, ek santara. Before specific noun or something already known, the moon, chand. Examples and sentences: I have a pen. मेरे पास एक कलम है. She ate an orange. इसने एक संतरा खाया. The book is on the table. किताब मेज पर है. Homework, घरेलू मशक. Write 5 sentences using a के साथ 5 जुमले लिखिए. Write 5 sentences using an. An के साथ 5 जुमले लिखें. 3. Write 5 sentences using the. The के साथ 5 जुमले लिखें. 4. Translate into English. मेरे पास एक किताब है. मैंने एक सेब खाया. वो गाड़ी मेज के करीब है. Let me know when you want day 10.